A very good morning, class. So class, if you all are going through the videos sent by me, you all must know that we have already finished with lesson number 7, that is correspondence with debenture holder. So class, today we will be starting with the next chapter related to chapter number 5, and I hope you all are getting it. So remember this game, class. We always used to play this game whenever we started a specific topic related to the particular topic. So remember, class, I am showing you different types of pictures. Okay, that game name is 4 pick one word, and I am showing you different type of pictures, and you have to guess that one correct word which is represent all these 4 pictures. So I hope all must have guessed it which lesson we are going to start today. So correct, you are. So we are starting today with our third chapter related to related to letters, that is letter writing. Okay. So, and we call it as a business correspondence. So as you all know what is the meaning of business correspondence, it means, so what is the business correspondence? It means an exchange of information in a written format for the process of business activities. The correspondence is a generally, it can take place between organization, within organization, or between the customers and the organization. The correspondence is generally of a widely accepted format that are followed universally. So we are starting with the lesson number 8, which is last chapter related to the letter writing, class, and the name of the chapter is correspondence with the depositors. Okay, so correspondence with depositors, secretarial practice subject, and lesson number 8. So as you all know, in the introduction part we already covered this part in our chapter number 5. So you all know about what is the meaning of deposits, what is the meaning of acceptance of deposit, what are the deposits actually. So we just do a quick introduction related to it. Okay, so introduction part. So deposits are basically short-term sources of finance, as you all know, and they are usually utilized or asked in order to satisfy the short-term working capital in the need of the company. So asking deposit from the public or member is a nothing but a short-term source of finance followed by the company the to raise the funds. Okay, the company cannot accept deposit for the period of less than 6 months and more than 36 months. So basically the company cannot accept deposit which are maturity or which are period of less than 6 months, and they cannot accept deposit for more than 3 years, that is 36 months. Okay, the company is liable to pay interest regular that is regularly at a fixed rate of interest along with the principal amount or a maturity. So that is why we saw, class, that acceptance of deposit are one of the cheapest way of raising the funds, but yes, it can be a risky option for the company if the company is not able to repay it to the depositor. So the company liable to pay the interest at a fixed rate along with the principal amount of maturity. Now the secretary has to enter into the correspondence with the depositor and also follow some instruction given by the board of director for the same. So under what condition does the secretary communicate or
correspondence with the deposits, okay, depositors. It can be related to the acceptance of deposit. It can be relating to the payment of payment of interest on the deposit. It can be related to the renewal of the deposit and repayment of deposit, okay. The company paying back money, so the letters relate to that. So under all these circumstances, when the secretary corresponds, he or she has to be very careful or conscious while corresponding with the depositor of the company. So because the secretary represents the company, right, बराबर, कंपनी किस सेक्रेटरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो, एंड which the members are depositing and giving their money to the company. So secretary has to be very careful and take some precautions while corresponding with the depositor. Now what are the precautions? What are the precautions we will be seeing right now? The following points should be kept in mind by the secretary while corresponding with the debenture holder. Okay, so first one, legal provisions. The secretary should follow the statutory provisions of the Companies Act 2013 and other relevant law while corresponding with the depositor. Now class, you all remember we started in a lesson number 5 with this particular topic, like secretary has to ensure the provisions related to the invitation, okay, depositors को invitation देना है, acceptance of deposit, renewal and repayment of deposits are duly complied with by the company while corresponding with the depositor. Secretary should observe the legal provisions, okay. That the secretary should be conscious and very much careful while corresponding with the depositor on a legal matters, okay. Next one, it is courtesy, okay. So being the secretary, as a secretary of the company, secretary should not be very much rude to their depositor. The company would not work out, because depositor means those who are investing into the company. कंपनी के अंदर वो क्या कर रहे हैं, अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है. यानी वो मनी कंपनी क्या करती है, फॉर देयर फ्यूचर प्रोग्रेस, उनके फ्यूचर के लिए वो मनी वो क्या करते हैं, यूज करते हैं. यानी दे आर इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के वो इन्वेस्टर है. सो वेन एवर सेक्रेटरी write a letter to the depositor, it should be very much courteous. They use the word thank you, sorry, whatever it is. जैसे जितना हो सके उतना पोलाइटनेस हमारे किस में होना चाहिए, लेटर में होना चाहिए. सो courtesy. थर्ड वन, क्विक रिस्पॉन्स, ओके, मतलब प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. लाइक नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट यानी क्या, तो क्विक. ये हमारा हो गया है, मतलब गए साल भी पढ़ा हमने, इस साल भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, यानी अभी दो चैप्टर हमारे लेटर से रिलेटेड हो गए. तो ये प्रिकॉशंस हर लेटर में सेक्रेटरी ले रहा है, बराबर है, और ये हम लोग वापस पढ़ रहे हैं. यानी ये सारे जो अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बाय हार्ट करने की भी जरूरत नहीं है. जस्ट गो थ्रू इट एंड आपको वो आने वाले हैं, ठीक है. सो प्रॉम्प्ट रिप्लाई यानी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स यानी क्या, तो क्विक रिस्पॉन्स. सेक्रेटरी शुड बी वेरी क्विक एंड compliance of the depositors without any delay. So the response of the secretary should be prompt and quick and they should be no delay. मतलब जो भी अगर कोई भी इंक्वायरी अगर डिपॉजिटर्स कर रहे हैं, तो उसमें जो रिप्लाई देना है सेक्रेटरी को, इट शुड बी वेरी क्विक. वो रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, ओके. नेक्स्ट है एक्यूरेसी, ओके. Accuracy means what? So while corresponding with the depositor, secretary should be provide correct and up to date information to the
depositor. The information must be factual and true. तो एक्यूरेसी मतलब क्या, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं सेक्रेटरी को, तो इट शुड बी वेरी मच ट्रू. सारी इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, आपको कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है. एंड एक्यूरेट होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए. जो भी फिगर्स है या जो भी नंबरिंग है या प्रॉफिट है, लॉस है, कुछ भी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, कंपनी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, कितना पैसे इन्वेस्ट कर रही है, कितना प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, कितना लॉस कंपनी को हुआ है, ये सारे जो नंबर रिलेटेड फिगर्स है, ये सारे के सारे नंबर्स या सारे के सारे जो फिगर्स है या जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है गुडविल. गुडविल यानी इमेज एंड गुडविल, कंपनी का गुडविल. सो while corresponding with the depositor, the secretary should always kept in mind that he or she should always try to maintain the goodwill and create a good image of the company in the mind of depositor. Not for a second the depositor should get a negative image about the reputation, goodwill or image of the company. So it is in the hand of the secretary, because secretary is a representative of the company, and so always the secretary should try to maintain the good image of the company in the mind of the depositors. Okay, next है U attitude. Okay, so what do you mean by U attitude? So you means who? You means the person is writing the letter to, मतलब सेक्रेटरी जिससे लेटर लिख रहा है वो पर्सन मतलब यू. ओके, सो द सेक्रेटरी टॉकिंग टू द डिपॉजिटर का पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी केप्ट इन माइंड. उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको माइंड में रखना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. शुड बी शोन इम्पोर्टेंट इन द लेटर. डिपॉजिटर को इम्पोर्टेंस देना है लेटर लिखते समय, कि इम्पोर्टेंट कौन है, कि मैं किसके लिए लेटर लिख रही हूँ, मैं किसके फेवर में लेटर लिख रही हूँ, या मैं जो लेटर लिख रही हूँ उसका बेनिफिट किसको होना चाहिए, कंपनी को होना चाहिए क्या, नहीं, इसका फेवर किसको होना चाहिए, डिपॉजिटर के बेनिफिट में होना चाहिए. तो यू एटीट्यूड मीन्स व्हाट, सेक्रेटरी इज राइटिंग द लेटर इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिपॉजिटर. डिपॉजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, तो लेटर लिखना है. So basically the secretary should write the letter to the depositor's point of view after taking consideration the requirement of the depositor. Depositors की क्या क्या requirements है, उनकी क्या demands है, उनको क्या तकलीफ हो रही है या उनके क्या डिमांड्स है, ये सारी चीजें माइंड में रख के आपको क्या करना है, करस्पॉन्डेंस करना है विद द डिपॉजिटर्स. इसको बोला जाता है यू एटीट्यूड. ओके, नेक्स्ट है consciousness. Okay, so consciousness means brief and short, exact to the point. मतलब क्या, तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है या आप जो लेटर लिख रहे हैं, अभी अब हमने कितने सारे लेटर्स दिख रहे हैं, 4 लेटर, ये वो उस चैप्टर के 4, इस चैप्टर के 4, अभी हम लोग वापस से 4 लेटर पढ़ने वाले हैं, यानी 4 नहीं 5. तो ये सब लेटर में हम लोग ने क्या देखा कि जो लेटर्स वो लिख रहा है सेक्रेटरी, वो लेटर्स कैसे है, टू द पॉइंट है, मतलब अदर इन्फॉर्मेशन या इधर उधर की इन्फॉर्मेशन उसने ऐड नहीं की है. वो लेटर्स कैसे है, तो जो उसे बोलना है वही उसने लेटर में क्या किया है, ऐड किया है. ऐसे लेटर्स को क्या बोला जाता है, तो कॉन्शियसनेस. सो सेक्रेटरी शुड बी मेंटेन कॉन्शियसनेस व्हाइल करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर. So consider consciousness means brief, short and to the point. Unnecessary and unrelevant information must be avoided. जो information unrelevant है, fruitless है, जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है लेटर में, ऐसी information आपको लेटर में ऐड नहीं करनी है. ओके, एंड लास्ट वन, secrecy. Okay, so while corresponding with the depositors, maximum secrecy should be maintained. Yeah, I know that we have to maintain transparency. हमें हमारी लेटर में क्या मेंटेन करनी है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, बराबर है. मतलब हमें इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है, हमको सब बताना है. तो आप बोलोगे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, आप बोल रहे सीक्रेसी भी मेंटेन करनी है, तो वो कैसे करेंगे. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच इज confidential as well as secret, also the depositor, जो इंफॉर्मेशन डिपॉजिटर को पता होनी चाहिए,
उतनी ही इंफॉर्मेशन हमें उन्हें क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन यू कैनॉट डज नॉट, इसका मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उससे ज्यादा आपको शेयर नहीं करनी है। देयर आर सम सीक्रेट बिकॉज द सेक्रेटरी इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सो एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी द सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी सीक्रेट और एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी वाइल करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन डिपॉजिटर को पता होनी चाहिए या उसका राइट है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उतनी ही इंफॉर्मेशन उन्हें क्या करनी है, तो प्रोवाइड करनी है। उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड नहीं करनी। ओके, सो आई होप all these points are clear. What are the precautions the secretary should take? Now we will be see what are the circumstances under which a secretary has to enter into a correspondence with the members, that is depositors. Okay, so let us see under which circumstances the secretary has to enter into the correspondence with depositor. These are the specimens letters. Okay, first one, thanking depositor for depositing amount and showing faith in the company. कंपनी के अंदर डिपॉजिट उनका अमाउंट, उनके पैसे डिपॉजिट करने के लिए और कंपनी के ऊपर विश्वास दिखाने के लिए वो हमें क्या कर रहे हैं, उन्हें थैंकिंग लेटर भेज रहे हैं। ठीक है, उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं कि हमारे कंपनी में आपने क्या किया है, तो इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ओके, उसके बाद है इन्फॉर्मिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू, मतलब अभी डिपॉजिट के ऊपर डिपॉजिटर्स को क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन वो इंटरेस्ट वो दो वे से क्या करते हैं, दे पे इंटरेस्ट बाय अ टू वेज, दैट इज फर्स्ट इज इंटरेस्ट वारंट एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड वन, लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट्स क्या हो रहा है, तो रिन्यूअल हो रहा है उसका, इसके रिलेटेड लेटर है। एंड इन्फॉर्मिंग डिपॉजिटर अबाउट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी, मतलब यहाँ पे डिबेंचर्स डिपॉजिटर्स डिपॉजिट क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, उसकी मैच्योरिटी हो गई है और उसका क्या मिल रहा है, अभी उस डिपॉजिटर को एक लमसम अमाउंट मिलने वाला है, तो उसके रिलेटेड लेटर उससे क्या करना है, तो लिखना है। ओके, so class, all this letter we will be starting for our next lecture. So we cover the specimen letter one by one. So we stop here today. Thank you so much for listening to me.